Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss classification of carbohydrates. So let's move to the whiteboard. So dear students, classification of carbohydrates. इससे previous lecture में हमने carbohydrates का introductory lecture किया था और उसमें basic जो information थी regarding carbohydrates उसको discuss किया था. This is the classification of carbohydrates. Dear students, carbohydrates are also called saccharides. They are also called saccharides. It is derived from a Greek word called saccharon. Clear? So it is derived from a Greek word that is saccharon. उसी से ये word है saccharides. The carbohydrates are classified into three major groups or categories. Clear? And these three major groups are, number one, the monosaccharides, number two are oligosaccharides, and number three are polysaccharides. So let's start from the first one, that is monosaccharides. So dear students, the type of carbohydrates which cannot be further hydrolyzed into simple sugars are called monosaccharides. Clear? तो ऐसी कैटेगरी या ऐसी टाइप है शुगर्स की जो मज़ीद अगर उनको हाइड्रोलाइज किया जाए, मीन्स जब उनका हाइड्रोलिसिस हो तो उससे मज़ीद कोई दूसरी शुगर ना बने. और इसका कतई तौर पर ये मतलब नहीं है, इट डजेंट मीन दैट दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. हाइड्रोलिसिस तो होगा इनका, लेकिन आफ्टर हाइड्रोलिसिस इनके हाइड्रोलिसिस से कोई और सिंपल शुगर नहीं बनेगी. क्लियर? नाउ some features or characteristics of monosaccharides. Number one, they are simple sugars.
ये सबसे सिंपल सादा शुगर्स हैं. Number 2, they are sweet in taste. Number 3, they are easily soluble in water. Number 4, they are instant source of energy. And this first, their general formula is CH2O क्लियर. और इसमें जो N है, N is a whole number which ranges from 3 to many thousands. क्लियर. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम जो शुगर है हमारे पास, जो सबसे सादा शुगर है, वो 3 कार्बन वाली होगी, ना 1 कार्बन ना 2 कार्बन. एटलीस्ट देयर शुड बी 3 कार्बन्स इन अ शुगर. आगे चलकर हम इसको डिस्कस भी करते हैं. नाउ द टाइप्स of monosaccharides. So dear students, based upon the number of carbon, they start from 3 and up to maximum is 7. They contain up to contain 3 to 7 carbon atoms maximum. और इसी के बिहाफ के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन है, इनकी टाइपिंग की जाती है. सो number 1 are trioses. Tri means 3. So these are the monosaccharides which have 3 carbons. At least they have got 3 carbons. तो ऐसी मोनोसैकेराइड्स जिनके अंदर 3 कार्बन एटम होंगे उनको कहा जाता है ट्रायोसिस. The monosaccharides containing 3 carbon atoms are called trioses. Clear? And its examples are 2. Number 1 is
this is 3 carbon sugar which is called, इसकी मैं नंबरिंग कर दूँ. This is carbon number 1, this is carbon number 2, and this is carbon number 3. So this is glyceraldehyde. And as you can see, it has over here the aldehyde group. इससे प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपसे बात की थी, आपको इससे एक बात शेयर की थी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनको उनकी जो केमिकल डेफिनेशन में मैंने बात की थी, दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स. तो ये भी इनके फीचर्स में ये बात आप शामिल कर सकते हैं. केमिकली they are polyhydroxy aldehydes, जो जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा they are called as aldoses, और ketones they are called as keto sugar. क्लियर? जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है उनको एल्डो शुगर कहेंगे, जिनके पास कीटोन ग्रुप है दैट कार्बोनाइल ग्रुप दैट दे आर कॉल्ड एज द कीटो शुगर्स. ठीक है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डो शुगर बिकॉज इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप एट द कार्बन नंबर 1. क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, इनका एक और भी फीचर है, ये है कि इनमें सिवाय पहली कार्बन के, एक कार्बन के अलावा बाकी तमाम कार्बन्स के साथ मौजूद होता है OH ग्रुप. हमने बात की दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी. पॉलीहाइड्रोक्सी पहली कार्बन को छोड़ के या फर्स्ट कार्बन को छोड़ के बाकी तमाम के साथ OH ग्रुप होता है. और जो फर्स्ट कार्बन होती है दैट इज आइदर द पार्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप. क्लियर? और आपको याद है आप आगे चलकर केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इस बात को कि अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर जो इनकी जो नेमिंग की जाती है, हमेशा कार्बन की जो नंबरिंग होती है वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं जिस एंड के ऊपर, जिस भी एंड के ऊपर मौजूद होता है कोई फंक्शनल ग्रुप. सो एज एल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो यहीं से कार्बन नंबरिंग स्टार्ट की जाती है. इसी तरह से एक और एग्जांपल विच इज शेयर्ड इन आवर बुक, दैट इज this is dihydroxy acetone. Clear? And as you can see over here, this is keto group, so this is a keto sugar. Clear? अब चूंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेंटर में है तो आप बेशक यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें. ठीक है, सो ये मिडल में ही रहेगा, इसे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहा जाता है. और डियर स्टूडेंट्स, दीज टू ट्रायोजेस आर intermediate of respiration and photosynthesis. इंटरमीडिएट का मतलब दरमियान में. चैप्टर नंबर 11 हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. तो उसमें देखेंगे कि जब रेस्पिरेशन होती है द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, और डिस्टेंस ग्लाइकोलिसिस के बिल्कुल सेंटर में जो है ये बनती है दीज टू शुगर्स. और इसी तरह से फोटोसिंथेसिस के अंदर भी जो डार्क रिएक्शन हम पढ़ेंगे उसमें भी ये बनती हैं. क्लियर? तो इस वजह से इनको यहाँ पर कहा जा रहा है दीज आर द ट्रायोज, दीज टू ट्रायोज आर द इंटरमीडिएट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. तो ये तो एक कैटेगरी होगी. नंबर 2 आर टेट्रोसिस. So dear students, tetrosis, tetra से, tetra means it has got 4 carbon. It has got
4 कार्बन्स. क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, हम इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे. द मोनोसैकेराइड्स containing 4 carbon atoms are called tetroses, and as far as its example is concerned, we have got an example, that is erythrose. और dear students, ये जो tetroses होती हैं, these are rare, ये बहुत रेयर होती हैं, and found in some bacteria. तो बैक्टीरिया के अंदर, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद होती हैं. टेट्रोसिस ये इसकी एग्जाम्पल है, और ये इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला भी लिख देता हूँ. C3H6O3. और इसी तरह से टेट्रोसिस C4H8O4. That is the general formula. Now, the third one is pentoses. Pentoses are, pent means 5. So these are 5 carbon sugars here, and they have got general formula C5H10O5. And my dear students, we can define them as the monosaccharides containing or having 5 carbon atoms are called pentoses. और dear students, इसमें as far as its example is concerned, we have ribose, that is aldo sugar, and ribulose, that is keto sugar, but a pentose sugar. Clear? So dear students, इसका जो occurrence की बात करें तो ये बहुत अहम है. आप लोग previous grades में भी पढ़ चुके हैं इनको, ribose को. So it is present in the nucleic acids, that is DNA and RNA. Clear? तो वहाँ पर ये मौजूद हैं ये sugars. आपको पता है कि जो DNA या RNA means the nucleic acids, and they have got 3 parts. They are made up of polynucleotide strands. इनके और जो polynucleotide strands होती है उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड 3 पार्ट से मिलकर बनती है. That is number 1 nucleotide, that is equal to, ये हम इसी चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, in the portion of nucleic acids. It consists of a pentose sugar plus nitrogenous base plus a phosphate group. So these 3 compounds make a nucleotide, और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है न्यूक्लिक एसिड. क्लियर? और इसके स्ट्रक्चर हमारी बुक के अंदर ड्रॉ किया गया है. उसको मैं ओपन स्ट्रक्चर भी और रिंग स्ट्रक्चर, अभी फ़िलहाल इसका ओपन स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूँ. इट इज़
ओवर हियर यहाँ पर राइबोस का CHO, then COH, H, COH, NH, COH, NH, 1, 2, 3, 4, and the 5. COH, H, and H, CH2OH. And its carbon numbering. This is carbon number 1, 2, 3, 4, and 5. So you can see this is the structure of ribose. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ड्रॉ करवाने के लिए आ सकता है. क्लियर? सो इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड शुगर. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन आर हेक्सोसिस. Hexa means 6. So they are the monosaccharides which contain 6 carbon atoms. Clear? और इसकी डिटेल फिर देखते हैं आगे चलकर. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मुकम्मल करेंगे मोनोसैकेराइड्स को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.